Hello everyone. This video is for grade UKG. Let us start. We have three different sections in this sheet. This sheet is divided into three different subjects, which are English, Maths, and EVS. So let us start with our first section, which is of English, which is of English. Write a rhyming verb for the given words. क्वेश्चन क्या है? राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर द गिवन वर्ड. ओके, इन वर्ड्स के लिए आपको एक एक राइमिंग वर्ड राइट करना है. मीन्स राइमिंग मीन्स ऑलमोस्ट जो सुनने में सेम लगे. लाइक जार, बार, BAR बार, JAR जार, BAR बार. ये क्या है? सुनने में एक जैसे है ना, जार बार. मैचिंग है, राइमिंग है. सो वी हैव टू राइट राइमिंग वर्ड्स लाइक दिस. सारे वर्ड्स के लिए हमें एक एक राइमिंग वर्ड यहाँ पर राइट करना है. लाइक जार, बार. पेन, PEN, पेन. राइमिंग वर्ड फॉर पेन विल बी hen, 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 hen. Boy, BOY, boy. The rhyming word for it will be toy, TOY, toy. TOY, toy. Boy, toy. So in this way you have to write the rhyming words for the given words. Okay, इन words के लिए आपको rhyming words यहाँ पे write करने हैं. As I have told you, like book, cook, bike, Nike, snip, zip, man, van. Understood? In this way you have to write. तो आपको इसी तरीके से सारे rhyming words complete करने हैं. जो भी मैचिंग वर्ड्स आपको लगे, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने बताया आप वही राइट करें. ओके, यू कैन राइट बाय योर ओन. आप अपने मन से भी आपको जो लगता है कि ये वर्ड इसका राइमिंग है, तो आप वो भी यहाँ पर राइट कर सकते हो. अंडरस्टूड? या. सो दिस वाज ऑल अबाउट इंग्लिश. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. The question is, look at the circle and fill in the blanks with the correct color name. Okay, in this you can see so many circles. यहाँ पे बहुत सारे circles भी दिए हुए हैं और इनमें क्या करना है हमें. और ये circles ना अलग अलग कलर के बने हैं. इसमें क्या करना है, हमें इनका कलर राइट करना है कि कौन से कलर का सर्कल है. अंडरस्टूड? द फर्स्ट सर्कल इज ऑफ रेड. सो व्हाट वी विल राइट? वी विल राइट रेड. RED, red. RED, red. See the next circle, it is of brown color. BROUN, brown. BROUN, brown. The third one is violet. तीसरा कौन सा कलर है? violet color. VIOLET, violet. VIOLET, violet. Pink, PINK, pink. PINK, pink. Orange, ORANGE,
A-N-G-E, orange. O-R-A-N-G-E, orange. Yellow. Y-E-L-L-O-W, yellow. Y-E-L-L-O-W, yellow. Blue. B-L-U-E, blue. B-L-U-E, blue. Green. G-R-E-E-N, green. So these are all the color names. So you have to write these color names in the correct circle. Okay, सही वाले सर्कल में आपको इन्हें फिल करना है. लाइक रेड सर्कल में रेड कलर, ब्राउन सर्कल में ब्राउन कलर, वॉयलेट सर्कल में वॉयलेट कलर. Understood? In this way you have to fill these circle with their proper color name. Understood? Now see the last section, which is of EVS. Last section of EVS, environmental studies. In this, what you have to do is you have to name the modes of the transport. Land transport. Okay, you can see these all transports of our land transport. ये सारे transport क्या land transport है, means ज़मीन पे रास्ते पे चलने वाले transports हैं, vehicles हैं. Now you have to write their name. इनके name write करने हैं. The first one is car. C-A-R, car. Repeat with me. C-A-R, car. Another is bicycle. B-I-C-Y-C-L-E, bicycle. B-I-C-Y-C-L-E, bicycle. Truck. T-R-U-C-K, truck. T-R-U-C-K, truck. And the last one is scooter. Scooter. S-C-O-O-T-E-R, scooter. S-C-O-O-T-E-R, scooter. Okay, let me revise one more time. Car, C-A-R, car. Bicycle, B-I-C-Y-C-L-E, bicycle. Truck, T-R-U-C-K, truck. And the last, scooter. S-C-O-O-T-E-R, scooter. S-C-O-O-T-E-R, scooter. So this was all about today's sheet. You have to practice. आपको क्या करना है, इन चीज़ों को रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, so that you can learn these. जब आप इन्हें प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें आपको लर्न हो जाएंगी. So
दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज शीट. इफ़ यू स्टिल हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, अगर अभी भी आपको कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक में, still you have any kind of doubt related to any question, you can ask me. Okay, thank you.